हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू साउथ स्टैंड व्यू। इंटरनेशनल ब्रेक था, मैंने एक बहुत लंबा ब्रेक लिया था इस चैनल से, बट आई एम बैक नाउ। दिस चैनल इज बैक एंड बैक विद अ बैंग। टॉटनहम 2, फुलहम nil, टॉप ऑफ द प्रीमियर लीग, 2 points गैप बिटवीन अस एंड सिटी एंड आर्सेनल। लास्ट सीजन के जो टाइटल रेस में जो दो टीम्स थे, इस सीजन अगेन जो दो टीम्स फेवरेट्स थी उनके हम ऊपर है अभी फिलहाल। 2 points का गैप बनाए रखा है हमने। नेक्स्ट मैच हमारा रहेगा क्रिस्टल पैलेस के साथ और हम उसके बारे में भी थोड़ा बात अभी करेंगे। पर हाउ गुड डज इट फील टू सी टॉटनहम प्ले सो वेल, गेट दीज रिजल्ट्स आउट ऑफ द टीम्स जिनके अगेंस्ट हम जनरली स्ट्रगल करते हैं, और एटलीस्ट वी आर एक्सपेक्टेड टू लूज अगेंस्ट दीज टीम्स। स्पेशली जब हम सिनारियो देखते हैं ऐसे, इस गेम से पहले टॉटनहम और आर्सेनल दोनों जॉइंट टॉप थे विद द सेम जीडी, विद द सेम पॉइंट्स। आर्सेनल पॉइंट्स ड्रॉप करती है अगेंस्ट चेल्सी, बट लिवरपूल जीत जाती है, सिटी जीत जाती है, और हमें सडनली ये गेम जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम पुरानी टॉटनहम देखते तो ये एक्सपेक्टेशंस के बोझ के तले दब के आई थिंक मेरे ख्याल से हम ये मैच शायद पॉइंट्स ड्रॉप कर सकते थे। बट ये टॉटनहम कुछ अलग लग रही है। एक्सपेक्टेशंस के साथ भी हम जब इस गेम में आते हैं और वो जिस तरह से हम वो फर्स्ट हाफ खेलते हैं, फिनोमिनल। आई थिंक सेम लाइक ल्यूटन, हम ये शायद पहले हाफ में ही 2-3 गोल मार के गेम आराम से जीत सकते थे। हमारी फिनिशिंग कहीं ना कहीं हमें धोखा दे सकती है आगे जाके, इसीलिए आई थिंक Ange Postecoglou will have to work on that. And I'm really liking what Ange Postecoglou says in his press conferences after the game. He sees the game like we do, like we fans do. सेकेंड हाफ जैसे ही मैडिसन, सॉन और रिचार्लिसन चले जाते हैं, हमारा क्लियर कट दिखता है कि एक ड्रॉप ऑफ हो गया है परफॉर्मेंसेस में, एक हम वो मोमेंटम बिल्ड नहीं कर पा रहे। और एंज पोस्टेकोग्लू जस्ट पॉइंटेड आउट द सेम थिंग इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस। ही सेड कि हम प्रेसिंग तो अच्छी कर रहे थे, लेकिन हम towards the end of the game in the second half especially, we were not true to what we want to play. We disrespected the way we want to play, and this is not acceptable, and we will work on that. अगर हम जीतते हैं जनरली, पहले कोई मैनेजर ये इग्नोर कर देते हैं, वो कहते हैं कि हाँ ठीक है हम जीत गए, इट्स फाइन, एंड जो भी है राइट। बट द वे एंज कम्स आउट एंड स्पीक्स, ही इज नॉट थ्रोइंग एनीबडी अंडर द बस। ही इज जस्ट सेइंग दैट एज अ यूनिट वी डिड नॉट डू वेल। एंड आप जब टॉप ऑफ द प्रीमियर लीग रहते हो, ऑफ कोर्स इट्स टू अर्ली टू से, जब आप फिर भी जब आप टॉप ऑफ द प्रीमियर लीग रहते हो और कंटिन्यूसली आप जीतते आ रहे हो, आप इस लीग के फर्स्ट मैनेजर बनते हो टू गेट द हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द डेब्यू सीजन। फर्स्ट 9 games में 23 पॉइंट्स इज द प्रीमियर लीग रिकॉर्ड बाय एनी मैनेजर इन द डेब्यू सीजन। ऑफ कोर्स आप जनरली छोटी छोटी चीजें इग्नोर कर दोगे, अच्छा ठीक है हम जीत तो रहे, बट नहीं, द वे एंज पोस्टेकोग्लू इज सेइंग अगेन एंड अगेन कि वी आर नोवेयर क्लोज टू द फिनिश प्रोडक्ट। और अगर ये हमारा 50%, 30% या 60% ऑफ व्हाट वी वांट टू बी और व्हाट एंज पोस्टेकोग्लू वांट टू बी, अगर ये है वो 50 और 60%, और अगर हम इससे और ज्यादा इंप्रूव हो सकते हैं, इज व्हाट एंज बिलीव्स, माय गॉड, आई थिंक हम एक बहुत ही रुथलेस टीम बन सकते हैं। जिस तरह से हमारी टीम खेल रही है, जिस तरह से हमारी, इट इज अ वेरी मॉडर्न टैक्टिक्स। यू नीड टू हैव अ क्लेवर ब्रेन इन द ऑपोजिशन डग आउट टू एक्चुअली टैक्टिकली आउटप्ले अस। हार्डली एनीबडी हैज टैक्टिकली आउटप्लेड अस दिस सीजन। आई डोंट थिंक एनीबडी हैज। जनरली आर, अगर हम कोई पॉइंट्स ड्रॉप करते भी है तो हमारी गलतियों की वजह से हम पॉइंट्स ड्रॉप करने वाले हैं। ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट एक लकी पेनल्टी उनको मिल गया, इट वाज द फर्स्ट गेम। आर्सेनल के अगेंस्ट एक ओन गोल और एक अगेन अ पेनल्टी। उसके अलावा टैक्टिकली आउटप्ले हमें जनरली कोई नहीं कर पाए। ऑफ कोर्स इफ यू लुक एट लाइक द यूनाइटेड फर्स्ट 20-30 मिनट्स, अगेन द सेकंड गेम ऑफ द सीजन, आप सॉन का गोल देखो, मिकी वैंडेविन वो बॉल विन करते हैं, वो देखो आप वो कहाँ पे है। वो जो एक नंबर 8 जिस पोजीशन पे होना चाहिए, वो पोजीशन पे है मिकी वैंडेविन, ओवर द हाफ लाइन, ओवर द हाफ लाइन। वी आर प्लेइंग सच अ हाई लाइन कि उनको ओवर द टॉप जाने के लिए चांस नहीं मिल रहा है।
अगर वो जाते भी है ओवर द टॉप, वी स्टिल डोंट केयर एनी मोर। गैरी ओनील ने एक अच्छा मंडे नाइट फुटबॉल में उन्होंने एक अच्छा ये बताया था कि आई लाइक दिस लाइक द बैकलाइन ऑफ टॉटनहम कि दे डोंट केयर अबाउट द नंबर नाइन्स एनी मोर। अगर वो आते भी है, दे नो कि विकारियो है वहां पे, मिकी वैंडेविन है जिसके पास ब्लिस्टरिंग पेस है, एक्सेलरेशन है, वी विल विन बैक द बॉल। मेन थिंग इज press as high as possible. Do not let them come out of their cocoon. और ये हमें देखने मिलता है जो हमारा passes per defensive action जो है, currently Tottenham leads that thing. We are allowing only 9 passes to our oppositions before we start making our tackles and win the ball back from them. It's phenomenal. Ruthless, relentless pressing करते हैं हमारी टीम, अंधी pressing नहीं है again. We are pressing very smartly. We're not allowing them to have those channels where through which they can play. जो हमारे फुल बैक्स इन्वर्ट करके खेलते हैं इस पोजीशन पे, मिडफील्ड जो इतना ओवरक्राउड हो रहा है, आई थिंक दिस इज पीक मॉडर्न फुटबॉल, दिस इज पीक मॉडर्न फुटबॉल एंड आई एम नॉट सेइंग दिस जस्ट बिकॉज ऑफ माई टॉटनहम बायस। आप कोई भी न्यूट्रल फैंस जो एक सेन फुटबॉल फैन पहले और बाद में लाइक राइवल फैन बने और जो भी है, आप उन सब की राय सुनो टॉटनहम की इस फुटबॉल के बारे में एंड सब लोग बस एक ही चीज कहेंगे आपको कि फुटबॉल बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग है, ये फुटबॉल बहुत ही प्रोग्रेसिव है। और जब आप ऐसे फुटबॉल, जब आप टैक्टिकली बहुत सुपीरियर होते हो, आप आपका लक फैक्टर जो होता है वो मिनिमाइज कर देते हो। हमने देखा लेस्टर वाले सीजन में जिस तरह से वो जीतते आ रहे थे, सबको लगा था कि okay, they'll slip this week or next week. They kept winning their games. Were they tactically superior than most other teams in the Premier League? I don't think so. They just had like good goal scoring unit. आर्सेनल अगर लास्ट सीजन की अगर आप बात करें, दे गॉट बेटर आई थिंक आफ्टर द फर्स्ट फ्यू वीक्स, बट पहले कुछ वीक्स अगर आप चेक करोगे तो आर्सेनल वर नॉट गुड, दे वर जस्ट ग्राइंडिंग आउट रिजल्ट्स। I don't think they were tactically superior. They look tactically superior this season, right? But they were not tactically superior last season. They were just winning out their games even when they were playing poorly sometimes. In Tottenham case, I don't think that's the case. हम एक लिवरपूल मैच अगर हम इग्नोर करें, आप बाकी सारे गेम्स अगर आप चेक करोगे तो वी हैव बीन एक्सट्रीमली डोमिनेंट इन ऑल ऑफ आवर गेम्स। और वो सारे जो कलेक्टिव स्टैट्स अगर हम सीजन के चेक करेंगे तो उसमें दिखेगा आपको टॉटनहम मोस्ट शॉट्स, most passes in the final third, most touches in the opposition box. This team is built to score multiple goals. और हम एक और वीडियो में इसके बारे में एक्चुअली बात करेंगे कि केन होने से या ना होने से इस टीम पे क्या फर्क पड़ा है। विल टॉक अबाउट इन मच डिफरेंट वीडियो। बट अगर हमें एक आउट एंड आउट नंबर 9 मिलता है जो बस गोल स्कोर करता है हालैंड जैसे, ओ माय गॉड, दिस टीम विल फ्लाई लाइक crazy. Goals galore, because we don't now care about how many goals the oppositions are going to score. Of course, there's always going to be that angle to it, but the emphasis is more on that how many goals we can score. And if you score 2, we know we can score 4. And that's what I'm liking about this Tottenham. This is the Tottenham of the old. This is the Tottenham that used to like going forward. और मैडिसन ने एक अच्छा कोट दिया अगेन आफ्टर द गेम लास्ट नाइट के प्री सीजन में शाख्तार के साथ हमारा जो मैच था, हम 1-0 ऊपर चले गए थे और जस्ट आफ्टर दैट वी स्टार्टेड like relaxing a little bit, and Ange Postecoglou ripped into them in the half time saying कि यही हम पिछले कुछ सीजन में करते आ रहे हैं इस क्लब में और ये मेरे अंडर नहीं होगा। आप 1-0 हो, 2-0 हो, 4-0 हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको फुल 90 मिनट्स भागते रहना है, आपको फुल 90 मिनट्स प्रेस करना है। और जब आप मैनेजर से ये डिमांड्स आती है, जब मैनेजर्स आपको बोलते हैं कि इवन राइट नाउ वी आर नॉट अ फिनिश प्रोडक्ट, माय गॉड, द स्काई इज द लिमिट मैन। और यही बस मैं देखना चाहता था टॉटनहम में। रिजल्ट्स आते रहेंगे, देयर आर गोइंग टू बी बम्प्स ऑन द रोड। हमारे जो अगले कुछ मैचेस है, फॉर एग्जांपल क्रिस्टल पैलेस की गेम, कुछ भी हो सकता है उस गेम में। फ्राइडे नाइट हम खेल रहे हैं आफ्टर द मंडे नाइट यस्टरडे। अगर हम फ्राइडे नाइट जीत जाते हैं तो एक प्रेशर बन जाता है सिटी आर्सेनल पे, हम लोग 5 पॉइंट का लीड बना लेते हैं। टू अर्ली इन द सीजन इतना कुछ मैटर नहीं करेगा, बट साइकोलॉजिकली हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
उसके बाद हम चेल्सी के साथ खेलेंगे. चेल्सी हैव अ ब्लिस्टरिंग पेस इन देयर टीम. दे क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर आर्सेनल on the weekend. They can beat us, right? But if we get a result out of Chelsea, then suddenly it looks much more better, right? It looks so positive, because then we play Wolves, then we play Aston Villa at home, not away. We play Aston Villa at home, and then we play City away. We have generally have that psychological advantage against City. De Bruyne भी नहीं रहेगा उस गेम में. We can definitely get a result out of it. So ये जो fixtures अभी लग रहा है, I don't think कि इनमें से कोई भी हमें tactically outplay कर सकता है. हमें हमें खराब खेलना पड़ेगा, जिसके वजह से उनको शायद पॉइंट्स मिल सकते हैं. एंड that's the control that we have in our own fate is what I'm liking this season. We are not relying on the opposition to play badly anymore. We just don't have to play badly, and we know that more often than not we'll get 3 points from that fixture. So that's what Ange Postecoglou has changed in this team. I know ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, but there's so much to talk about. There's so much of praise that I have in my heart right now, and I'm just enjoying this ride. I'm just I can't tell you how happy I am to see Tottenham play like this. ये सारे these fans, these loyal fans who have been going to this stadium years in, years out, week in, week out, and have been subjected to dross football in the last 3-4 seasons. But the way the stadium is rocking now, uh, full 90 minutes, the atmosphere, the way the players have embraced the fans. Madison, जिस तरह से वो fans के साथ एक connection बना लिया है. Son, what a phenomenal leader. I think Kane अगर होता इस टीम में तो बहुत बेटर होता, but it's good that Kane is not here, because now it's actually looking like Tottenham 2.0, a new project under a new manager, under a new captain. पूरी टीम नई लग रही है. Son, अगर केन होता तो ऑफ कोर्स केन कैप्टन बन जाता हमारे टीम में, एंड वी वुड हैव मिस्ड आउट ऑन दिस सॉन लीडरशिप. आई थिंक सच अ फिनोमिनल लीडर. ही जस्ट कीप स्माइलिंग ऑल द टाइम. सारे प्लेयर्स को उसके वजह से एक वेलकम रखता है. आई थिंक ही हैज गुड कनेक्शंस विद एवरीबॉडी. देयर आर नो लॉन्गर लाइक दिस स्मॉलर क्लिक्स. देयर इज स्मॉलर inner circles that we have in our team. Everybody is just like good friends with everybody, and these are the vibes. These are the vibes, right? और ये vibes जो होती है ना, आपको फॉर एग्जाम्पल आर्सेनल के लास्ट सीजन में दिखेगी. ये वाइब्स आपको अच्छा फुटबॉल खेलने में मदद करती है, एक दूसरे के लिए मरने के लिए मदद करती है. जैसे सॉन ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वी आर सो विथ ईच अदर, इट्स सो मच लाइक फैमिली, कि अगर कोई थक जाता है तो हम उसके लिए एक्स्ट्रा माइल रन करते हैं. अगर कोई नया प्लेयर सब्स्टिट्यूट होके अंदर आता है तो उसको सेटल इन होने के लिए, उसको थोड़ा टाइम देने के लिए हम उसके लिए एक्स्ट्रा काम करते हैं. ये जो कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, ये जो केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ, वो तभी बनती है जब आप वाइब्स एफसी हो. और ये वाइब एफसी हमें अब दिख रही है टॉटनहम में, एंड दैट्स व्हाट आई एम लाइकिंग. थिंग्स आर लुकिंग मच 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 ब्राइटर, लाइक वी हैव ऑलवेज सेड, probably in vain a lot of times, that future looks bright, the future looks lily white, but this time around it actually looks so much brighter. And kudos to Ange Postecoglou, man. Firstly, congratulations to him for being that first manager. I mean, though the manager to get most number of points in their debut season. In the first 9 games, he's gotten 23 points, and he looks relentless. Who's gonna stop us now? That's what I'm gonna. That's what I want to see. How are we going to lose now? Who is going to be that team जो हमारे weaknesses जो है वो हमारे सामने लेके आ जाएगी? That's what I'm interested in now, right now, because we are nowhere close to our full strength, and to get to our full strength, there's supposed to be some teams that gonna exploit our weaknesses. और जब तक वो weakness exploit नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये हम नहीं कर सकते प्रीमियर लीग में. तो I'm just waiting for that, and I hope that happens much later in the season, क्योंकि अगर ये होता है दिसंबर या जनवरी के अराउंड, phenomenal, because then we can get recruitment in January and go for that, good finish in this season. Still not in the title race. मानस के स्ट्रीम पे मैंने ऐसी मजाक में बोल दिया था कि टॉटनहम गोना विन द लीग. आई डोंट थिंक वी आर इन द टाइटल रेस, बट अगर जनवरी तक हम टॉप 2 टॉप 3 पोजीशन पे रहते हैं,
I think we will be in the title race in that case. So let's see how it goes. Come on, you Spurs.